Good morning students, welcome to the class. I am Rajni, your science teacher in DAV Police Public School, Kathar. Students, we are on the chapter number 2, Microorganism, Friends and Foe. And we have studied how the microorganisms, they are helpful in our daily life. And how the microorganisms, they are helpful and harmful to us. Now including the one more topic, the microorganism, how they are harmful to us. The topic is food poisoning. As the name is given here, the food poisoning is the disease that is caused by the consumption of contaminated food. The disease that is caused by the contaminated food, the food having the bacteria. Contaminated food is the food having the bacteria or microbes. So when a person consumes contaminated food, the food which is stored for some time outside at normal temperature, the food when it is not stored properly, the food which is made with not in the proper manner or secure manner, that food contain the bacteria, and eating the food cause the food poisoning. The bacteria that are present in this food are the Clostridium, Staphylococcus and the fungus like Aspergillus. So consuming that food cause the food poisoning. This is also one more the harmful effect of the microorganism. So to prevent the food to get poisoned, what should we do? To protect our food so that the food they are not infected by the bacteria, we have to preserve the food properly. This is the reason we place our left food in refrigerators. So we use refrigerators at our home for protecting the food to get poisoned. There are various methods of the food preservation. Food preservation is the process of treating or handling the food as to stop or slow down the growth of microorganisms. The preservation is occurred by the various process. They are the given chemical method. The chemical method to preserve the food is using salt and edible oil. Like the pickles, they are preserved by using the salt and edible oils. And the second method is jam, to preserve the food in sugar. The jams are prepared by using sugar, large amount of sugar. The using of sugar and salt in the food reduce the water content of the food and preserve it for a long time. And other chemicals which are used to preserve the food are sodium benzoate and sodium metabisulfite. These are the chemicals, they are called preservative. And the other method they are used to preserve is drying. We dry our dry fruits also. We dry dry fruits so that we can eat for a long period of time. By this method, drying method, we can use apple, pear, banana, mangoes, papaya, apricot and coconut, and the cereals also, they are used for a long time by drying method. Salting method, adding salt. As we have already studied, adding salt is a method of preservation. Food items like fish, meat, amla, raw mangoes, turmeric, etc. can be preserved by using common salt. It prevents the growth of microbes. The other method is the use of acetic acid, sirka. We have already used it at our home. Sirka, when we add sirka or acetic acid in onion and in garlic, in many of the other process, we can prevent the food or preserve the food. By using sugar, oil and vinegar,
Food items like jams, jellies, squashes can be preserved by using sugar solution. It reduces the moisture content which inhibit the growth of bacteria. In the same way, we can prevent the spoilage of the pickle by using oil and vinegar because the bacteria cannot live in such environment. Vegetables, fruits, fish, meat are often preserved by using oil and vinegar. Heat and cold treatment. Heating food items kill all microbes. जब भी हम फ्रिज में से कभी खाना निकालते हैं तो उसको अच्छे से गर्म करते हैं बिकॉज हीटिंग से बैक्टीरियाज जो हैं वो मर जाते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग कि या तो ज़्यादा हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो वहाँ पर आपके बैक्टीरियाज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो नहीं करते, या फिर कोल्ड ट्रीटमेंट में नहीं करते, वो मॉडरेट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर पे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपकी फूड आइटम्स पे अटैक करते हैं. तो स्टोरिंग फूड आइटम एट लो टेम्परेचर यानी कि अगर हम उसको कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, तो भी ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं होती है. स्टोरेज एंड पिकलिंग. इसमें आप देख रहे हो जैसे हम स्टोर करते हैं, कैनिंग एंड बॉटलिंग भी इसी का प्रोसेस है. हम कैंस के या बॉटल्स को जो है वो पहले अच्छे से उनको स्टरलाइज करते हैं और फिर उनके अंदर फूड आइटम्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं ताकि उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ से बचा सकें. पैस्चराइजेशन. पैस्चराइजेशन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिजर्विंग द फूड. इट इज़ डिस्कवर्ड बाय लुईस पास्चर. Here the picture is given. The Louis Pasteur discovered this technique of pasteurization. The process of boiling milk below 212 degree Fahrenheit for about 15 to 30 minutes and then suddenly chilling it to prevent the growth of microbes. This is called pasteurization. We have already discussed this technique of pasteurization. इसमें क्या होता है, जो आपके पैकेट मिल्क मिलते हैं या बॉटल के जो मिल्क मिलते हैं उनको इसी टेक्निक से जो है वो प्रिजर्व किया जाता है. जो आपके घरों में पैकेट मिल्क आता है उसको पहले पेस्चराइज किया जाता है. पेस्चराइज करने के लिए वो क्या करते हैं, मिल्क को पहले 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसको गर्म करते हैं, बॉईल कर लेते हैं अच्छे से, जिससे कि उसके अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किल हो जाते हैं. और फिर उसको सडनली ही ठंडा कर देते हैं, चिल्ड कर देते हैं, ताकि मैंने अभी डिस्कस किया आपके साथ कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो लो और हाई टेम्परेचर पे वर्क नहीं करते, मॉडरेट टेम्परेचर पे वर्क करते हैं. तो हमने एकदम से हाई टेम्परेचर से उसको लो टेम्परेचर दे देते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ग्रोथ ना हो पाए और वो पेस्चराइज मिल्क जो है वो फिर हमारे घरों में पैकेट्स के थ्रू या बॉटल्स में पहुँच जाता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड.